Students, welcome back to our video coaching. Today we will start our discussion from hydrogen bond. Already we covered ionic bond, covalent bond, coordinate bond. Today we will discuss a special type of bond, that is hydrogen bond. What is hydrogen bond, students? It is a bond which is formed between hydrogen and a very high electronegative element. One side रे hydrogen, other side रे very high electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen. So गोटे पटे hydrogen, अन्य पटे fluorine और oxygen और nitrogen भितरे hydrogen bond develop होगा. There is no other element with which hydrogen will form hydrogen bond. Hydrogen will form hydrogen bond with either fluorine or oxygen or nitrogen only. माने हाइड्रोजन टा फ्लोरीन सहित बा ऑक्सीजन सहित बा नाइट्रोजन सहित हाइड्रोजन बॉन्ड कर परिबो आ कहा सहित नुहे. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 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 डॉट. एंड इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स, इन हाइड्रोजन बॉन्ड नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट इज देयर. आयोनिक बॉन्ड रे, कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट थिला. हाइड्रोजन बॉन्ड रे नो इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्वड. So look at hydrogen bond, the force of attraction which develop between hydrogen atom and a highly electronegative atom like fluorine or oxygen or nitrogen is known as hydrogen bond. Here electron of atoms are not involved. It is denoted by dot 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 line. Hydrogen form hydrogen bond with fluorine or oxygen or nitrogen only. Already बुझी सारली. Now we will go to see some examples of hydrogen bond. Let us take the example of hydrogen bond HF. Bit 1 HF. HF रे कोन हेतिबो ना H और F भीतर तो कोवेलेंट बॉन्ड हबो. H1 इलेक्ट्रॉन दबो, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दबो, कोवेलेंट बॉन्ड हबो. Another HF molecule भीतर भी कोवेलेंट बॉन्ड. Another HF molecule भीतर भी कोवेलेंट बॉन्ड. If mo some amount of HF नेबी ताहले ता भितर crores HF molecules समिति अछंती. Every HF molecule भितर covalent bond अछि, but this molecule रे F और this molecule रे H भितर hydrogen bond develop हबो. Similarly this molecule रे F और this molecule रे H भितर hydrogen bond develop हबो. This molecule रे F और this another molecule रे H सहित hydrogen bond develop हबो. This molecule रे H को another molecule रे F सहित hydrogen bond develop हबो. So hydrogen bond is not present in HF molecule. It is present in this molecule and this molecule. Two different molecules रो F और H भितर hydrogen bond develop होछि. Similarly, second example we will discuss water. Water OHH कोवालेंट बॉन्ड करिकी वाटर फॉर्म करचंदी. 1O 2H सहित कोवालेंट बॉन्ड कला. सिमिलरली अनदर वाटर मॉलिक्यूल. Similarly another water molecule. Lot of water molecules are present. So this molecule रो O और this molecule रो H भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हबो. This molecule रो O और this molecule रो H भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हबो. ऑक्सीजन डा गोटे molecule रो, हाइड्रोजन डा another molecule रो. Similarly this molecule रो ऑक्सीजन, another molecule रो हाइड्रोजन सहित हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हबो. This molecule रो हाइड्रोजन, another molecule रो ऑक्सीजन सहित हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हबो. Similarly another example we can discuss ammonia, nitrogen, 3 covalent bond with 3 hydrogen atoms. Nitrogen, 3 covalent bond with 3 hydrogen atoms. Nitrogen, 3 covalent bond with 3 hydrogen atoms. Now this molecule रो nitrogen और this molecule रो hydrogen भितर covalent bond. This molecule रो nitrogen और this molecule रो hydrogen भितर covalent bond. This nitrogen another molecule रो hydrogen सहित covalent bond. This hydrogen another molecule रो nitrogen भितर covalent bond. So in this way, this hydrogen another molecule रो nitrogen सहित hydrogen bond. ओके कोठी जदि कोवालेंट बॉन्ड कहि देथिबी भूल रे ताकू इग्नोर कर दियो. दिस डॉट 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 दिया हिच माने हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, so these are the examples of hydrogen bond.
नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रॉडली आम टू टाइप्स डिवाइड कर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बुझापी आम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कथा मन पकाओ already we know about this word international match cricket हो फुटबॉल हो international match माने कौन इंडिया इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया दीज आर द इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस मीन्स गोटे नेशन एनादर नेशन दैट इज इंटरनेशनल गोटे नेशन एनादर नेशन सहित खेलिले दैट इज इंटरनेशनल मैच बट इंडिया भितर जदि स्टेट माने खेलिबे दैट विल बी इंट्रानेशनल मैच नेशन भितर स्टेट माने निज निज भितर खेलिले दैट विल बी इंट्रानेशनल मैच गोटे नेशन बाहर आ गोटे नेशन सहित मैच खेलिले दैट इज इंटरनेशनल मैच सिमिलरली इंटर कॉलेज कंपटीशन इंट्रा कॉलेज कंपटीशन बुझाऊँ इंटर कॉलेज कंपटीशन माने आम कॉलेज स्टूडेंट्स एनादर कॉलेज स्टूडेंट्स मान सहित कंपटीशन हेले दैट इज इंटर कॉलेज कंपटीशन बट आम कॉलेज भितर केवल आम कॉलेज स्टूडेंट्स मान भितर कंपटीशन हेले दैट इज इंट्रा कॉलेज कंपटीशन सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड माने वन मॉलिक्यूल एनादर मॉलिक्यूल भितर हाइड्रोजन बॉन्ड हेले दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रे एटम भितर देखेले दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एटी मु सब देखैछि ऑल आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज दिस मॉलिक्यूल रो फ्लोरीन को एनादर मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन दिस मॉलिक्यूल रो फ्लोरीन को एनादर मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन भितर हाइड्रोजन बॉन्ड हेछि सो ऑल आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नाउ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड टा दुटा सिमिलियर एटम भितर दुटा सिमिलियर मॉलिक्यूल भितर हे परिबो डिफरेंट मॉलिक्यूल बट सिमिलियर हियर ऑल आर डिफरेंट मॉलिक्यूल बट सिमिलियर सो सिमिलियर मॉलिक्यूल भितर भी हाइड्रोजन बॉन्ड हे परिबो डिफरेंट मॉलिक्यूल भितर भी हाइड्रोजन बॉन्ड हे परिबो फॉर एग्जांपल इफ HF and H2O are present so this fluorine और this hydrogen भितर भी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो परिबो dissimilar molecules are different ता सहित टाइप भी डिफरेंट here molecules are different but type is same so this case रे भी intermolecular hydrogen bond हे परिबो this case रे भी intermolecular hydrogen bond हे परिबो and already intramolecular hydrogen bond कोन बुझेली intramolecular hydrogen bond माने the hydrogen bond present between two atoms of same molecule intra माने same molecule intramolecular माने same molecule भितरे जहा hydrogen bond हे परिबो 2002 the hydrogen bond present between two atoms of same molecule example B1 ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल B2 ऑर्थोबेंजोइक एसिड एगुड़ाक सब क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी एबे खाली टिके मने रखि दियो जे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रे एग्जांपल ए दीटा डिटेल्स हमें क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िबा ओके राइट डाउन द नोट स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल HF HO HN so out of these three hydrogen bonds all are equal strength ना किए more strength किए less strength अच्छी so कौन point पिला मैंने strength of a hydrogen bond is directly proportional to electronegative of the atom one side the hydrogen अच्छी other side fluorine रही परिबो oxygen रही परिबो nitrogen रही परिबो strength is directly proportional to electronegative of atom जहाँ electronegative more that hydrogen bond is strongest and we know electronegative of fluorine greater than that of oxygen greater than that of nitrogen electronegative of fluorine greater than oxygen greater than nitrogen similarly hydrogen bond strength ra bhi HF hydrogen bond greater than HO hydrogen bond greater than HN hydrogen bond kaina strength of hydrogen bond is directly proportional to electronegative of atom one rakho very important thing now we will discuss
consequences of hydrogen bond. consequences माने result output माने hydrogen bond present जोगु physical property रे कौन changes आसीबा गोटे compound भितरे माने if a compound is present hydrogen bond what additional physical properties it will possess बा तार physical properties रे कौन changes हबो कोटा गोटे इंक्रीज हो पारे कोटा गोटे डिक्रीज हो पारे कौन चेंजेस हम से विषय में पढ़ा होची consequences of hydrogen bond. so students कौन देखिले आमे ना हाइड्रोजन बॉन्ड जोठी अच्छी कोभालेंट बॉन्ड जमिति रहिबा कथा रहिछि ता सहित गोटे एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप होची ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड and this is a molecule एई molecule रे F सहित एई molecule रे H भितर हाइड्रोजन बॉन्ड होची so due to हाइड्रोजन बॉन्ड molecule गुडा को आउटिके strongly attracted बा strongly associated हले ना नहीं. listen students, two molecules no hydrogen bond but two molecules hydrogen bond is present तो hydrogen bond जोगु molecule भितर गोटे extra attraction force develop हला so conclusion होची जोठी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड मोर एसोसिएटेड सो मॉलिक्यूल गुड़ाक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और मोर एसोसिएटेड हेले कौन कौन कनक्लूजन्स बा कौन कौन कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होची ताको हम डिस्कशन करबा. सो कौन लिखले एठी इफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड देन द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड विथ एन एडिशनल फोर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड जोगु मॉलिक्यूल भितर गोटे एडिशनल फोर्स बा एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हबो हेंस द मॉलिक्यूल्स आर हाईली एसोसिएटेड मॉलिक्यूल गुडाक निज निज भितर हाईली एसोसिएटेड हेबे स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स थिले हमें हाईली एसोसिएटेड कह जिवो मॉलिक्यूल्स आर हाईली एसोसिएटेड ड्यू टू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ओके सो मॉलिक्यूल्स गुड़ाक जब हाईली एसोसिएटेड हेले सेमानक भितर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सटा स्ट्रांग हैला कौन कौन कनक्लूजन्स हम फर्स्ट कनक्लूजन हम द सब्सटेंस व्हिच पोजेस हाइड्रोजन बॉन्ड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स टू मॉलिक्यूल भितर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर अच्छी ताको बॉयल करवा निश्चित भाव डिफिकल्ट हम मोर टेम्परेचर देवाक पड़ो बिकज बॉइलिंग माने कौन मॉलिक्यूल गुड़ाक दूर को जीवे गैस हेबे माने मॉलिक्यूल गुड़ाक फार हेबे मूव करेंगे. सो इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर without hydrogen bond. So example is boiling point of water is more than boiling point of HCl. हमें water और HCl नबा HCl easily evaporate कर जीवो water evaporate करिया पे ठीक है high temperature दरकार. For example HCl 46 degree centigrade रे evaporate ही परिबो water evaporate हेबा पे 100 degree centigrade is required. So clearly boiling point of water is more than that of HCl. This is due to presence of hydrogen bonding in water and absent in HCl. Now what is the another conclusion coming? All conclusions are due to the fact that molecule भितर force of attraction strong है गला. So what is the second conclusion or next conclusion coming? Now due to intermolecular hydrogen bonding gas can convert to liquid. विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग रे गैस थिबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जदि एसोसिएट हे गला इट कैन कन्वर्ट टू लिक्विड. लुक एट टू द एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कन्वर्ट्स लिक्विड टू ए गैस. फॉर एग्जांपल H2O और H2S नेली. लुक एट ऑक्सीजन सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ग्रुप 16. Oxygen is present in group 16, sulfur is also present in group 16, but H2O ta liquid at room temperature and H2S is gas at room temperature. Room रे आमे जदि H2S prepare करिबा से gas हबो water prepare करिबा से liquid हबो. So both are the elements present in group 16. H2 group 16 रो गोटे एलिमेंट सहित मिसिला एठी भी H2 group 16 रो गोटे एलिमेंट सहित कंबाइन कला but one is liquid at room temperature other is gas at room temperature. Why? Because in H2O intermolecular hydrogen bonding is present which increases the attraction between the molecules and association between the molecules, and we know molecule भितर attraction more हेले gas will convert to liquid will convert to solid. This we know from our gaseous state chapter. So here hydrogen bond is present in water, so molecule with attraction becomes more, so it converts to liquid, but H2S no hydrogen bond, so it converts to gas.
नेक्स्ट कंक्लूजन कौन आछी स्टूडेंट्स, more hydrogen bond means the molecule is more viscous. More hydrogen bond arrow mark, molecule is more viscous. Why? अच्छा फर्स्ट बुझिबा व्हाट इज viscous. viscous माने जो लिक्विड टा इजीली फ्लो करिवो दैट इज लेस viscous. फॉर एग्जांपल हमें वाटर नेबा आउ वाटर रे हेवी अमाउंट रो सुगर ऐड करिकी हीट करिकी गोटे लिक्विड तैयारी करिबा. जो मिठा गुड़ाक बनईकरी जो चीनी पानी रे पकाउछंती सेई चीनी पानीटा केमती प्रिपेयर होइथाउची वाटर रे टे सफिशिएंट सुगर पकईकरी हीट करिकरी ताको स्टायर करी 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 मिसाउची. सो नॉर्मली वाटर नियो टिके चीनी पकाओ मिसाओ, किंतु वाटर नियो चीनी मोर एंड मोर अमाउंट पकाओ मिसबनी न मिसले हीट करिकी मिसाओ. इफ वी विल कंपेयर दीज टू सॉल्यूशंस, नॉर्मल सुगर सॉल्यूशन टाको आमे जदी ढाली देबा से फ्लो करी करी इजीली जीवो. बट द चीनी सिरा जो बनईचे आमे मिठा पाई जो चीनी रो सॉल्यूशन टा बनईचे ताकू जदी आमे फ्लोर रे ढाली देबा से डिफिकल्ट रे मूव करिवो. So that chini sira is more viscous as compared to the sugar solution. So simply another example mu dउची oil आउ grease. grease जानि थिबो स्टूडेंट्स, grease माने गैरेज रे सब यूज होची गाड़ी गुडा करे डिफरेंट पार्ट्स रे लगा होची grease. that grease will not flow, जोठी हमें पके दबा से सेमती रहिबो इजीली फ्लो हबनी. बट oil इजीली फ्लो हबो. so oil is less viscous and grease is more viscous. so viscosity कौन जानिले, then the point is if hydrogen bond is more viscosity will be more because association more हबो. association more हेले easily flow करि परिबनी. so more hydrogen bond means more viscosity. example is glycerol is more viscous than ethanol. this is the formula of glycerol, CH2OH, covalent bond CHOH, covalent bond CH2OH. this is glycerol and this is ethanol, you know in class 10th. now look at clearly glycerol रे number of hydrogen bond more हबो. ये गोटे ग्लिसरल मॉलिक्यूल लेबी ता पाखरे आ गोटे ग्लिसरल मॉलिक्यूल लिखिबी तो दिस H को तार O सहित हाइड्रोजन बॉन्ड हबो, दिस H को तार O सहित हाइड्रोजन बॉन्ड हबो, दिस H को तार O सहित हाइड्रोजन बॉन्ड हबो, दिस O को तार H सहित हाइड्रोजन बॉन्ड हबो. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी मोर. फॉर्मूला देखिले जना पड़ी जाउछि ग्लिसरल रे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर, सो ग्लिसरल इज मोर विस्कस. this much is about hydrogen bond in fundamental level. okay, write down students. Students, now we will discuss another interesting concept, orbital concept of covalency. We know the meaning of covalency, number of electrons shared by an atom during covalent bond formation is its covalency. मने पकाओ any atom covalent bond form कला बेले जेतिकिटा इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो सेटा होची तार covalency. we know. now एठी covalency सहित orbital को रिलेट करैछि. कोन कहूछि, covalent bond is formed by overlapping of half filled orbitals. सो कौन मीनिंग बाहरला ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रो ओवरलैप जो कोवैलेंसी होची ताहेले केतना कोवैलेंट बॉन्ड हबो जेतना हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट अछि. एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल माने ईच ऑर्बिटल भितरे वन इलेक्ट्रॉन. सो केतना इलेक्ट्रॉन से शेयर करिवो जेतना हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट अछि. बुझ परथो लिंकटा. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हला बेले हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रो ओवरलैपिंग हुए. सो केतना कोवैलेंट बॉन्ड हबो जेतना हाफ फील्ड ऑर्बिटल अछि. एंड ईच हाफ फील्ड ऑर्बिटल रो वन इलेक्ट्रॉन. सो केतना इलेक्ट्रॉन से शेयर करिवो कोवैलेंट बॉन्ड को जेतिटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल. सो कंक्लूजन कोन हला, कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन इट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मन रखो. Covalent bond is formed by overlapping of half filled orbitals. Hence, covalency of an atom is equal to number of half filled orbitals present in it. Any atom ro covalency जानिया पे तार number of half filled orbitals find करिवा. Number of half filled orbitals is equal to covalency. Let us
दिस कॉन्सेप्ट को आम अप्लाई करबा किछि केस रे नंबर ऑफ हाफ फील्ड और कोवैलेंसी सेम होछि ना नहीं लुक एट फर्स्ट एग्जांपल लेट कम टू फ्लोरीन 9 फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 so what you know about covalency of fluorine फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ए सब होची सिंगल वैलेंसी वन वैलेंसी माने कोवैलेंसी 1 ताले फ्लोरीन रो कोवैलेंसी 1 आमे जानिले फार्मूला रो जानि पाउछ भी HCl माने हाइड्रोजन रो वैलेंसी 1 क्लोरीन रो वैलेंसी 1 HF हाइड्रोजन रो वैलेंसी 1 फ्लोरीन रो वैलेंसी 1 सो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जे भी नियो तार कोवैलेंसी 1 आमे ऑलरेडी जानिछे नाउ ए जो कॉन्सेप्ट कहा गला कोवैलेंसी इज इक्वल टू तार नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ठीक होछि ना नै चेक करबा तो आको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेबा 1s2 2s2 2p5 2p रे 3 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑर्बिटल भितर डिस्ट्रीब्यूट करबा ईच को 1 1 देबा देन पेयरिंग करबा ताले नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स केता हला number of half filled orbitals is equal to 1 हला number of half filled orbitals 1 आगुरु हमें जानिचे कोवैलेंसी is equal to 1 सो जो कांसेप्ट कह जायछि ताहा फ्लोरीन पे एक्यूरेट हला एनादर पे टेस्ट करबा ऑक्सीजन पे 8 1s2 2s2 2p4 अच्छा ऑक्सीजन रो वैलेंसी हमें जानिचे ऑलरेडी 2 एटी खाली चेक करबा दिस कांसेप्ट अनुसार 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अछि ना नहीं सो 2p4 माने कॉन्फ़िगरेशन बनेले ईच को 1 1 देली देन पेयरिंग कले नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स केता हला नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2 हला एंड वी नो कोवैलेंसी इज इक्वल टू 2 so the concept is also correct for oxygen then come to test for nitrogen 7 1s2 2s2 2p3 now this 2p3 को 3 orbital so each get 1 electron so number of half filled orbitals क्या था 3 so number of half filled orbital is equal to 3 and we know covalency of nitrogen is also 3 so the concept is applicable for fluorine oxygen and nitrogen let us check for carbon 6 1s2 2s2 2p2 so 2 को डिस्ट्रीब्यूट कली लुक एट स्टूडेंट्स मु ओनली आउटर मोस्ट टा कॉन्फ़िगरेशन करके नंबर ऑफ हाफ फील्ड देखि दउची बिकॉज इनर गुडा को तो सब फुली फील्ड ना अब हाफ फील्ड मिलिबनी केवल जहाँ आउटर मोस्ट टा ही हाफ फील्ड मिलिबो इनर गुडा सब फुली फील्ड सो हियर 2p2 माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमिति हला एमिति इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल केता हला कार्बन पाए नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 हला बट कार्बन रो वैलेंसी होची 4 बट वी नो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4 सो एई जो कांसेप्ट हमें एते जोर सोर रे डिस्कशन कले सेई कांसेप्ट फ्लोरीन रे ठीक हला हमें भाबिला हम कथा पूरा ठीक ऑक्सीजन रे ठीक है आउ टे कॉन्फिडेंट हेले नाइट्रोजन रे ठीक है आउरी खुशी लगिला बट हठात कार्बन रे देखिले कॉन्सेप्ट ठीक होनी कार्बन कथा जमती पड़ला आम मुहटा छोट हो गला ओके सो कहीं ना कॉन्सेप्ट तो कार्बन रे काम करूनी कार्बन रे ओनली 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बट कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4 ताले कौन है ना स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट कार्बन रे भी काम करुची आमको टिके बुझीबा को पड़िबो व्हाट इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जानी सारिबा परे आमे क्लियरली बुझी परिबा जे कॉन्सेप्ट कार्बन को भी केमिति काम करुची ओके
Students, now we will discuss what is excitation of electron. Then we will discuss how this concept is correct for carbon also. Presently हमको लागुची concept टा carbon पे भूल हैला बली, but excitation कौन discussion कला परे हमें जानी परिबा this concept is also obeyed by carbon. What is excitation, students? Look at atom electron सब arrange है कि अच्छी. If outermost orbit रे one vacant orbital and one fully filled orbital अच्छी, then one electron will jump from fully filled orbital to vacant orbital. Remember, a very important process is observed in atoms. If a vacant orbital and fully filled orbital is present in outermost cell रे if vacant orbital and fully filled orbital present अच्छी, then one electron jump from a fully filled orbital to vacant orbital. Then one electron will jump from a fully filled orbital to vacant orbital. If outermost orbit रे एमिति गोटे fully filled orbital अच्छी and एमिति गोटे vacant orbital अच्छी, then one electron will jump from fully filled orbital to vacant orbital and situation कौन होगा, both half filled ही जिबे. Very important process. If one fully filled orbital and a vacant orbital is present in outermost orbit, then one electron will excite from fully filled to vacant and both will come half filled. Now if outermost orbit रे 3 fully filled orbital and 3 vacant orbital is present, then one electron transfer ही परिबो बा 2 ही परिबो बा all 3 ही परिबो. 3 हेबा को बाध्य नुहे. Now listen another example. If outermost orbit रे 3 fully filled orbital and 3 vacant orbital is present, one electron excite ही परिबो, 2 excite ही परिबो. Look at एठू जेते बळे 1 excited ही के ठीक आसिला, अदर टा रहिबो. 2 इलेक्ट्रॉन अच्छी एक्साइटेशन हला, 1 इलेक्ट्रॉन हला पर एक्साइटेशन हबनी. Similarly, all 3 also can excite. So, if more than one fully filled and more than one vacant orbital is present, ताले गोटी एक्साइटेशन नहीं परिबो, दुईटा एक्साइटेशन नहीं परिबो, all 3 एक्साइटेशन नहीं परिबो, all एक्साइटेशन नहीं परिबो बा गोटी भी परिबो, any number एक्साइटेशन नहीं परिबो. So एक्साइटेशन पे कंडीशन कौन है स्टूडेंट्स? outermost cell रे गोटे fully filled orbital थिबो and a vacant orbital थिबो, ताले one electron excitation होबो. सेमती more than one fully filled and more than one vacant orbital थिले one excitation ही परिबो by any number excitation ही परिबो. This is called excitation of electron. Excitation can take place if and only if vacant orbital and fully filled orbital is present. outermost cell रे vacant orbital fully filled orbital present थिले ही excitation हबो. If both fully filled and vacant orbital is not present in outermost, then excitation हबोनी. Consider an atom having 3 orbits. If 2 orbit रे गोटे fully filled orbital अच्छी and 3 orbit रे गोटे vacant orbital अच्छी, ताले electron 2 orbital रू बा 2 orbit रू 3 orbit को excite कर परिबोनी. बुझिपारछ ना पिला माने? Both fully filled and vacant should be in outermost orbit. If 3 electron अच्छी, if 3 orbit अच्छी, ताहले outermost माने third orbit रे ही vacant थिबो, fully filled थिबो, तबे excitation नहीं परिबो. Second orbit रो fully रू third orbit रो vacant को excitation नहीं परिबो नाही. So it is a condition टा दला. And normally bond form करिया पूर्वरु excitation takes place. If this condition is satisfied, if this condition अच्छी माने outermost cell रे गोटे fully filled orbital and a vacant orbital अच्छी, then
excitation of electron take place before bond formation. Bond form heବା ପୂର୍ବରୁ excitation of electron takes place. Now ଦେଖିବା ଏ condition ଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? Fluorine ପାଖରେ condition ଟା ଅଛି କି? Fluorine ର outermost orbit ହେଲା second orbit. Second orbit रे ये fully filled, ये fully filled, ये fully filled, ये half filled. So fully filled orbital available अच्छी but vacant orbital available नहीं. So fluorine रे excitation है परिबनी. Oxygen रा outermost orbit 2, oxygen outermost orbit 2 हेले से fully filled available अच्छी vacant available नहीं. So here also no excitation. Nitrogen also fully filled available अच्छी second orbit रे but vacant available नहीं. So here also no excitation. But in carbon, look at my dear students, outermost orbit रे fully filled available 2s, second is the outermost orbit. So outermost orbit रे fully filled is available and outermost shell रे vacant is available. So in carbon, one electron excite from 2s2 to 2p2. So that condition is satisfied by carbon. ताहले in carbon, one electron excite from 2s to 2p. So if a 2p को हमें नाम देबा 2px, 2py, 2pz, ताहले one electron excite from 2s to 2pz. So EC after excitation कौन आउची my dear students? EC after excitation is equal to 1s2 2s1 है जीवो 2s2 थिला एक्साइटेशन गोटे हे गला एठी की एक्साइटेशन गोटे एठी हे गला माने कोन हे जीवो ओके एक्साइटेशन टा लेट शो कर दउ जनाले फिगर रे excitation will takes place to here. So this will be 1s1, sorry, this will be 2s1 and here this will be 2p3, 2p2 thila 2p3, so 2s1 2p3. Now 2s1 means half filled, 2p3 empty hela, so all are half filled. So number of half filled orbitals kete hela जानि पारछ? Number of half filled orbitals is equal to how much hela? Number of half filled orbitals is equal to 4 hela and we know covalence is also 4. So orbital concept of covalency is applicable to carbon also. So students, this is very important. Orbital concept of covalency is important and excitation is important. If condition is satisfied, माने outermost orbit रे fully filled orbital टे and vacant orbital टे present अच्छी, ताहले excitation takes place before bond formation. Excitation है जीवो before bond formation. Most cases रे excitation हबो. गोटे दीटा example तो अच्छी chemistry रे excitation न है कि chemistry कथा जान जो पिला माने जहाँ भी rule कहिबा हमें 100% places रे से applicable न हो, किसी ना किसी तरह exception अच्छी. But chemistry is the science of exceptions, you know very well. Okay. Now write down. This is about orbital concept of covalency and excitation of electron. Very important.